Hello students and welcome to Sathi IAS. I hope all of you are doing well and you have been watching the mapping series meticulously. अब अंटिल नाउ मैपिंग सीरीज में हमने वर्ल्ड मैपिंग खत्म कर लिया है. हमने पिछले वीडियो के साथ इंडियन मैपिंग स्टार्ट किया था. लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट इंडियन नेबर्स. इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन से स्टेट्स किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट द फिजियोग्राफिक यूनिट्स of India. Now we are starting with the Indian mountain ranges, the important mountain ranges that exist in our country. फिजियोग्राफी जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे वी हैव द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स व्हिच मेक अप वन ऑफ द फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया. The northern and northeastern mountains, they consist of the Trans-Himalayas, the Himalayas and the Purvanchals. Right? So these are a very important mountain range of the country. इसके beyond भी, even beyond these mountain regions, this mountain physiographic region, इंडिया में बहुत सारे mountain ranges exist करते हैं. तो सारे हम cover करेंगे in this session. Now before I start the session, I request all of you कि ये जो PPT है इसको download कर लो. Pinned comment में there is the link available for downloading this PPT. उसको download कर लेना, जो भी extra point है उसको PPT में add कर लेना, या फिर अगर notes बनाते हो registers में लिखते हो वहां पे ले जाके लिख लेना. ठीक है. Now इस PPT में I have provided you maps, यहाँ पे भी हैं and ये same map यहाँ पे भी है. This map has a better clarity compared to this map. Now I won't be able to teach इस map से because you know India ऐसे लेटा हुआ है इसमें. It won't be possible for me to show you properly where which region is. That's why I am teaching from here. But ये map and ये map बिल्कुल same है. This map has been taken from my book, that is Indian and World Geography, which is published by McGraw-Hill, and that's why this watermark exists on that map. Okay, it won't be bothering you क्योंकि इसके पीछे का सब भी visible है. So let's start with the first mountain range of India, which belongs to the northernmost mountains of the country, that is the Trans-Himalayas. Now Trans-Himalayas की हमने बात की थी. They are a part of the northern and northeastern parts of India, northern and northeastern mountains of India. They were created during the Himalayan orogeny. जब हमारी जो Indian plate है ये टकराई with the Eurasian plate, that led to the creation of the Trans-Himalayas, the Himalayas, the Purvanchals and so on. Trans-Himalayas में चार important ranges हैं. We have Karakoram, which is also known as Krishnagiri. We have Ladakh, Zanskar, जिसको Zanskar, ZANSKAR भी लिखा जाता है, and the Kailash Mountains. Now Kailash Mountains are completely outside India, whereas the rest of the three, they have their presence within the country. तीनों are confined in the Union Territory of Ladakh. Fine. After that, to the south of the Trans-Himalayan ranges, the Karakoram, Ladakh and Zanskar range, we have the Greater Himalayas. Now ये जो हमारे Greater Himalayas हैं, they extend from here up till here. ये start होते हैं at this location where we have the Nanga Parbat, and they extend up to here where we have the Namcha Barwa. So they start from Nanga Parvat, move up till Namcha Barwa. ठीक है. सिक्किम में the Kanchenjunga mountain. The Kanchenjunga mountain, it is located within the Greater Himalayas, also known as the Himadris. To the south of the Himadris, we have the second Himalayan range, that is the Himachals. Now the Himachals, they are highly dissected or broken by the movement of important rivers in the region. And that's why ये multiple छोटे छोटे parts में exist करता है हिमाचल वाला region. So हिमाचल वाला region, अगर हम इधर से start करें from the west till east, we have the Pir Panjal, we have Dhauladhar, here we have Kumaon, Nag Tibba, Mussoorie, यहाँ पे some extension in the Sikkim region and up until here. Fine. These are the Himachals. Himachals are highly dissected. नेपाल में इनका जो पार्ट है इसको हम कहते हैं the महाभारत hills. महाभारत hills.
To the south of these, we have the Shivaliks. Now, the Shivaliks, also known as the outer Himalayas, the Shivaliks, they are almost continuous from here till Uttarakhand, then till here. Fine. They're almost continuous. यहाँ पे इनका एक small extension in Jammu and Kashmir is known as the Jammu Hills. Then the Shivaliks start, and their extension in northeastern parts of India include the Dafla, Mirir and the Abor Hills. The Mishmi Hills are not a part of the Shivaliks. The Dafla, Miri, Abor Hills are the extension of the Shivaliks in northeastern parts of India. Then what is Mishmi? Mishmi Hills, they are a part of the Purvanchals. So यहाँ पे है आपके Himalayas, and almost to the perpendicular of Himalayas we have the Purvanchals. Now Purvanchals, ये एक इनका एक कर्वेचर वाला शेप है जिनका कॉन्वेक्स साइड इंडिया की तरफ है एंड कॉनकेव साइड म्यांमार की तरफ है. ये स्टार्ट होते हैं अरुणाचल प्रदेश में. We have Mishmi, we have Patkaibom, we have Naga Hills. In Manipur, we have Manipur Hills. In Mizoram, we have Mizoram Hills. And they then extend into Myanmar in the form of the Arakan Yoma Mountain. These Arakan Yoma Mountains then extend, and they are submerged under water, and they are what are making the Andaman and Nicobar Islands. कोई भी hills water के नीचे अगर submerge हो गए तो जो इनका top है, जो crest वाला region है, this is above the water, this is making the islands. Fine. So Andaman and Nicobar Islands are considered as an extension of these Purvanchals and Arakan Yoma into the Bay of Bengal region. Fine. So these are your Purvanchals. Then what about these hills? Garo, Khasi, Jaintia, Barel and Mikir. Dekhiye. When I was talking about physiography of India, I talked very clearly that Meghalayan plateau, the Meghalayan plateau is a part of the peninsular plateau. जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था उस टाइम एक क्रैक क्रिएट हुआ विद इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड दिस क्रैक between the Rajmahal and the Garo Hills, this crack eventually got filled up by the sediments, by the alluvial soil or the sediments that was brought about the rivers of the Ganga as well as the Brahmaputra system. ये rivers से जो sediments आया वो यहाँ पे भर गया, इस क्रैक में भर गया. इसका नाम है, इस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप. Another name for this is the Garo Rajmahal gap. Fine. So Meghalayan plateau was actually a part of peninsular plateau. ठीक है. So ये जो गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर एंड बरेल हिल्स हैं, these hills are a part of the Meghalayan plateau. ये मेघालयन प्लेट्यू के पार्ट हैं. मेघालयन प्लेट्यू में डायसेक्शन हुआ जिसकी वजह से हिल्स क्रिएट हो गए. सिमिलरली छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे भी डायसेक्शन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे भी hills create हो गए. So as the extension of the Chota Nagpur plateau, we have the Chota Nagpur plateau, but that we'll study in the plateau regions. Here the hills that we have the Rajmahal Hills, the Ayodhya Hills, the Badam Pahad, Badampahar. We have the Ramgarh Hills, Melan Hills and the Garjat Hills. So these are all basically the dissected and eroded parts of the Chota Nagpur plateau. ठीक. अब आते हैं हम गुजरात में. गुजरात में यहाँ पे है कच्छ हिल्स. सो कच्छ हिल्स जो हैं स्लाइटली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रीजन स्लाइटली हायर रीजन्स हैं, द कच्छ हिल्स. यहाँ पे वी हैव सम स्मॉल रेंजेस नोन एज द मांडव, गिरनार एंड द गिर रेंज. जो आपका गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे द ओनली एग्जिस्टिंग हैबिटेट natural habitat of the Asiatic lion, it is lying over here in the Gir range. Next, let's talk about this and this, the important parts, the important ranges of India, the Western Ghats and the Eastern Ghats. Now, Western Ghats are also known as the Sahyadris. Now, Sahyadris जो हैं,
सह्याद्रीज दे वर क्रिएटेड व्हेन इंडिया वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. जब इंडियन सबप्लेट नॉर्थ मूव कर रही थी, अ पार्ट ऑफ इंडियन सबप्लेट it broke down and subsided, went down inside the ocean. The other part, it experienced a bouncing up, and because of this bouncing up, जो ये part था इंडिया जैसे मूव कर रहा था, this is ocean, this is land. यहाँ पे एक fault create हुआ, this part was moving faster compared to the this part, तो यहाँ पे एक fault create हुआ. Along this fault, this part it underwent a subsidence, it subsided. So this was C. This part it subsided, and this part it experienced a bouncing up, and that led to the creation of the Western Ghats, also known as escarpments. So these are Western Ghats. फाइन. नाउ वेस्टर्न घाट्स के ही एक्सटेंशन है बेसिकली. जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन था वहां पे काफी कुछ जो रिवर्स हैं, जैसे हमारी गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, ये जब रिवर्स हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन से मूव कर रही थी, दे लेड टू they led to basically the erosion of the Deccan Plateau, which led to creation of these small ranges, which include the Harishchand range, the Balaghat range, Ajanta range, Nirmal range, Chandor range, and so on. Fine. So हमारा Deccan Plateau, it got eroded and led to the creation of these small mountain ranges. So यहाँ भी plateau erode करके mountains बना रहा है. कैसे? ये पूरा प्लेट्यू था. This plateau it experienced erosion and it got converted into 3 separate mountains. Okay, plateau क्या होता है? Top is flat. Mountains क्या होते हैं? Rising high compared to the surrounding area with a crest associated with its top. Right? So इनका top flat नहीं है, तो इनको अब हम प्लेट्यू नहीं बोल रहे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक हिल बोल रहे हैं या माउंटेन रेंज बोल रहे हैं. सो वी हैव द चंदौर, देन वी हैव अजंता, वी हैव निर्मल, वी हैव बालाघाट एंड वी हैव द हरिश्चंद्र रेंज. यहाँ पे इन साउथ वी हैव द बाबा बूदन हिल्स. द बाबा बूदन हिल्स, you know, near in the state of Karnataka. And then the southward extension of the Western Ghats include the Nilgiris, Annamalai, Cardamom Hills. Fine. These are the southern extension of the Western Ghats. Western Ghats के ही southern extension है. It is at the Nilgiris. It is at the Nilgiris that हमारे जो Western Ghats हैं and हमारे जो Eastern Ghats हैं वो मिलते हैं. They meet at the Nilgiri mountains. Fine. Now Nilgiris kind of are at a tri-junction of 3 states, that is Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Mostly Tamil Nadu mein there is a district, Nilgiri district, right? So most of the mountains, most of the Nilgiris are located in Tamil Nadu, but definitely they have extension in Karnataka as well as in southern Karnataka as well as Kerala. Now ये जो है Annamalai और Cardamom Hills, these hills they are completely located in the states of Kerala as well as Tamil Nadu. Next, let's talk about the Eastern Ghats. Now Eastern Ghats, they start to the south of the Brahmani river. Brahmani river जो है उसके south में start होते हैं and they go up to the Nilgiris. यहाँ पे many rivers flow through the Western Ghats and flow from the Western Ghats into the Bay of Bengal. And while these rivers are flowing, be it Brahmani, be it Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Vaigai, Pennar, all these rivers, they do what? They cut the Eastern Ghats into multiple parts. So while the Western Ghats, they are more or less continuous from here till here, the Eastern Ghats, they are highly broken. बहुत ज़्यादा broken range है ये. कुछ पार्ट इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, and so on. Western Ghats जितना continuous नहीं है हमारे Eastern Ghats. Now Eastern Ghats, how did they get created? Eastern Ghats were basically a old fold mountains. बहुत पहले यहाँ पे fold mountains create हुए थे. These are old fold mountains. Fine.
और भी स्टडीज कहती हैं कि ये कुछ और हैं, बट most accepted study says that these are old fold mountains which eventually got highly dissected by the movement of the rivers. जैसे यहां से महानदी जाती है, यहाँ पे हमारी गोदावरी जाती है, यहाँ पे कृष्णा जाती है, इधर से यहाँ से कावेरी जाती है, ये सारी रिवर्स ने इसको हाईली डाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं यहाँ पे तो सिंपल इसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ ओडिशा वी हैव महाबलेश्वर, वी हैव महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द मोस्ट कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। उसके साउथ में फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जहां कृष्णा गोदावरी कावेरी मूव कर रहे हैं वहां पे ईस्टर्न घाट्स आर हाईली डाइसेक्टेड। वी हैव द एरामेला, नल्लामला, एरामेला, नन्नामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवरॉय, पलानी। All these are the parts of the eastern घाट्स। ये सारे ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है मैपिंग क्वेश्चन, नलामला, एरामला, पलानी एंड बाबा बुदन हिल्स, which of the following are the parts of eastern घाट्स, you would know what to mark. The Baba Budan Hills are an extension of the Western Ghats. They are not the part of the Eastern Ghats. Eastern Ghats के अगर पार्ट हम देखें, we have महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी में पीक भी है, महेंद्रगिरी पीक। वी हैव एरामला, नलामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवरॉय and Palani. Okay, so these are the parts of Eastern Ghats. Western Ghats के अगर हम पार्ट देखने पे आए तो क्या होगा? We have the simple Sahyadris, we have Baba Budan Hills which are extension of the Western Ghats, we have Nilgiris, Annamalai, Cardamom. पूर्वांचल, चलो बाकियों के भी पार्ट्स देखते हैं। पूर्वांचल्स के अगर हम पार्ट्स देखने आए, पूर्वांचल्स के पार्ट्स वी हैव मिश्मी, पटकायबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड वी हैव देन द एक्सटेंशन मीजो हिल्स यहाँ पे एंड द एक्सटेंशन इनटू म्यांमार नोन एज अराकान योमा माउंटेन्स। फाइन। अरावलीज के एक्सटेंशन अगर देखो, वी हैव सिंपल अरावलीज विच एक्सटेंड इनटू दिल्ली इन द फॉर्म ऑफ द दिल्ली रिज। Vindhyan range, this is Vindhyan range, its extension is the Kaimur range. We have the Satpura ranges whose extensions are Gwaligarh, we have Mahadev hill, we have the Maikal hill. Then इधर अगर हम देखें हिमाचल में क्या क्या आता है, वी हैव पीर पंजल, धौलाधार, कुमाऊं, नागटिब्बा, मसूरी। All these are the part of the Himachals. Shivaliks, we have the Jammu hills, then the continuous extension of the Shivaliks. Then on northeastern India, we have Miri, Abor, and the Mishmi hills. If we talk about Meghalayan plateau, Meghalayan plateau में क्या क्या आएगा? We have Garo, Khasi, Jaintia, Mikir, Bareil. These are all in Meghalayan plateau. Fine. छोटा नागपुर प्लेट्यू में अगर हम देखें, we'll have राजमहल, रामगढ़, अयोध्या या अयोध्या, अयोध्या और अयोध्या सेम है। अयोध्या सिटी यहाँ पे है, यूपी में है, बट अयोध्या या अयोध्या हिल्स इधर है। ठीक है। देन वी हैव द बादाम पहाड़, मैलान, गरजात।
Fine. These are parts of Chota Nagpur Plateau. ट्रांस हिमालयस में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर. ग्रेटर हिमालयस कंटिन्यूस एक रेंज बना रहे हैं फ्रॉम नंगा पर्वत टिल नामचा बारवा. Okay, so that's all about the important mountain ranges of India. In the next session, we'll be covering the important peaks as well as the important glaciers of the country. So stay tuned. Thank you so much for watching the session. Goodbye and take care.